Namaskar. Very good evening from India and good morning from US. To all our viewers, we are heartily welcoming you all to our, I should say, annual ritual now. Um, Today is the 19th Memorial Day of the legend of legends, the Mount Everest of Hindustani instrumental music, I should say. Aftab Sitar Ustad Vilayat Khan Sahab, and through ICMC,
since 2020, we are trying to pay our tribute to Ustadji and also other greats um, through this ICMC platform. And today we are immensely grateful to our, I think he's integral part of ICMC now, Ustad Hidayat Hussain Khan Sahab, our very own Hidayat Bhaiya, who is the younger son and disciple of Ustad Vilayat Khan Sahab and a sitarist by himself. So, Bhaiya, I welcome on behalf of ICMC. Let me welcome you to today's event, the memorial event where we are remembering Abba. Adab Ram thank you so much. As always, it's it's wonderful to always connect with you and talk to you about Abba and music and go down memory lane. Um, Abba has obviously left such an impact on the world of music, and those fortunate enough to have personally met him. Um, every time we do these online events, talk about Abba, and then it becomes harder and harder to do it after a piece of his music, because his music speaks a language that is so vast and that is so communicative that no words can and really be spoken. But I really like to say one thing, that from on behalf of Rambhai and myself, that these talks that we do is merely something that we have heard and experienced, and we're just passing it on. We're not sitting over here and analyzing or understanding or trying to make you understand what this music is or what this world is. We are merely just in service of whatever we've heard and we've experienced through great musicians. We are merely just passing it along, because these ustads had so much to give, that talking about any one little aspect of them could really fill up books, and we are certainly not qualified to do that, but we're just mere tools that are sort of just reminiscing on a feeling and emotions and memories that we have. Just to continue in the same line as Hidayat Bhai, our mainstream media, our newspaper, television, they have not, or they are still not playing the role that they need to play to preserve the heritage or present our own cultural values, cultural heritage, great masters, their work, their life, and their legacy, their contribution to the extent they should do. With social media in our hands, we, the worshipper of Indian classical music, not only we both, there are many. All of us are trying to, do our best, do a kind of service, do a kind of seva to this music form of music, and the great musicians who have taken the music in such a level. Yeah. So we are just trying to do in that line, as that I just explained. Today, um, uh, we thought to know learn certain aspects of Khan Sahab's music, Ustad's music, and his pioneering contribution in the semi-classical form in particular. Because this great, as Hidayat Bhai just said, these great Ustads have done so much of work. One small aspect, if we take and we can, learn and discuss and hours and hours from their work. So a small part we thought of to choose and discuss on, which is Ustadji's contribution, pioneering contribution in the semi-classical music, which includes all the vidhas of semi-classical music. You just name it. It can be Thumri, Dadra, Kajri, Chaiti, Hori, Barsati, Jhula, Sawan. Uh, and then if you go to the folk music, different
forms of folk music of different states. He accumulated, he listened, he uh, practiced and refined in a presentable form in a classical concert, right? Formal concert of Indian classical music, and he presented, and then he set a trend. He was a trendsetter, as we all know. um, Not only Thungri, he presented so many dhuns also, some tunes also, which might not be based on a particular rag, but and then I from some reference I heard that at some point he played tappa also. Ji. But later he did not. But in his younger days, I heard from one of the disciple of Pandit Radhika Mohan Moitro that the time when Pandit Buddhaditya Mukherjee started playing tappa very elaborately in concerts, uh, one of the disciples took it to Radhu Babu that so beautifully tappa is being presented in sitar. Then Radhu Babu told, I have heard this from Khan Sahib in such and such instances to his disciples. So. I think the ragas, the his LPs, including this Khamaj LP, just which we a portion of it we just listened to, and there are several recordings, including this Pilu, Bhairavi. We can have a separate episode on Bhairavi itself. Uh, ये खमाज की रिकॉर्डिंग में अब्बा के एक म्यूजिक में एक जो कमाल बात थी कि वो जी, उनके म्यूजिक में एक पिक्चर नजर आती है. right. Today the world has become very aware of the conscious mind, and they tell you meditate and speak to your inner mind. And music is one thing that communicates with the inner mind, the conscious mind, most easily. And one of the beautiful things about Abbas music was that there is a lot of visual value to his music, because वो जब भी उनके दिमाग में एक स्टोरी चलती थी. तो आप जैसे खमाज का उन्होंने जो शुरू किया और वो जो निखात पे गए हैं, जिस तरीके से उन्होंने कोमल निखात लगाई है, एक 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 आपको स्टोरी और एक विजुअल चीज आने लगती है दिमाग में, and जी, vision में. So it's not only that you're listening to music, it's the story that is coming with that music, and which is extremely prevalent in his semi-classical music, and folk music and everything. Because अगर पहाड़ी बजा रहे हैं, I promise you, you will feel that you will see the mountains, and you will feel that एक नमी जो होती है ना पहाड़ों में हवा की, you will feel that also, because जी, उनकी विजन और उनकी जो स्टोरी थी. हम लोग उस दिन बात कर रहे थे राम भाई कि म्यूजिक में what happens when you go above music almost. When you go above the laws and the rags and everything, and then you are just expressing yourself, and this is just a medium of talking and expressing, and musicians like us, we are always sort of in the do's and don'ts of the rag. ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये अभी ठीक है, ये अभी नहीं ठीक है, ये इसके बाद करें या वो उसके बाद करें. एक थॉट प्रोसेस कॉन्स्टेंटली चल रहा है. हम लोग मैप करना जी, चाह रहे हैं हम क्या कर रहे हैं. But Abba and musicians like Abba, these great maestros, they just went, and somehow जहाँ जिस रुख में वो गए, उस रुख रास्ता खुलता चला गया. एक बड़ी अच्छी सूफी कहावत है कि अगर सलूक दिल से सजदा आपने जहाँ पे भी कर दिया, काबा वहीं आ जाएगा जहाँ आपने सजदा कर दिया. हाँ, So that is the kind of feeling and the emotion that his music brought to us. जी. As you said, the storytelling manner, Ji. there is always some story to tell. And another very important aspect, which I think, like if he plays khamaj for in four instances, four consecutive days, four khamajas are different, because each of the interpretation are having certain stories. जी,
You know, because Abba would say this कि देखो जब वो प्रोग्राम पे जाते थे तो he was he didn't have a scripted concert कि खमाज में मैं ये तान बजाऊंगा उसके बाद ये तिहाई बजाऊंगा तो ऑडियंस का ये रिएक्शन होगा, फिर मैं इस तरीके से मीन खींचूंगा लंबी कि ऑडियंस बोलेगी कि वाह देखो कितनी सांस लंबी है साज में। वो जी फीलिंग नहीं थी उनके बजाने में। वो जी जिस तरीके से उनको कोई चाय वाले ने चाय दी प्रोग्राम के पहले और उसने जिस तरीके से अब्बा से बात करी या ट्रैफिक थी रास्ते में या किस मूड में थे या रसगुल्ला खाया या उन्होंने समोसा खाया, all जी of those things affected his performance and which is and he very, was in हाँ contrast to today's music. It is going into the kind of trend of having pre-scripted music, pre-rehearsed thing, all fixed things. चार कॉन्सर्ट सुनो, चार कॉन्सर्ट में सेम चीजें सुनने को मिलेगा. So they're very different, no? अभी जी that जी it's a very different approach, it's a जी completely different approach actually. I think we can, as you just mentioned about his Pahadi, so जी we can listen to a little bit of Pahadi, maybe a little bit Alap, and then little bit of the composition. If you, absolutely. जी. हाँ, 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 क्या बात है। हाँ, हाँ, हम्म, हाँ, हाँ, हम्म, हाँ, 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 सुभान अल्लाह। भैया जहां Yeah, से भी शुरू करिए, आप कोई भी पीस उठा लीजिए, वहां से ही मैजिक स्टार्ट्स. you know राम भाई ये म्यूजिक नहीं है, ये अब्बा मुझसे इंडिविजुअली, आपसे इंडिविजुअली और जितने भी सुनने वाले हैं ना उनसे इंडिविजुअली बात कर रहे हैं और उनका हाथ पकड़ के उनको पहाड़ों में लेके जा रहे हैं। अरे बाप रे, सही में. मतलब ये दिस इज बियॉन्ड म्यूजिक, आई मीन दिस इज समथिंग
that I don't know how you come to that stage. I don't know what happens, that how can you, जो भी इंसान इस वक्त ये म्यूजिक सुन रहा है, ये म्यूजिक नहीं है, वो अब्बा ने उसका हाथ पकड़ा है और उसको बोला है कि आओ मेरे साथ, तुमको मैं पहाड़ों पे लेके चलूं, जी बिल्कुल भैया। इंडिविजुअली। जी, we'll listen to a little bit of composition with tabla. Let's जी। do. Oh, oh, भैया बंद करने का मन नहीं कर रहा है टू बी मैं ऑनेस्ट। देख रहा था, वो पॉज का बटन दबाना बड़ा मुश्किल था यार। लेकिन आप देखो, इसमें वो जो बाबा ने मुखड़ा शुरू किया है अरे उसका, बाप रे बाप रे बाप जी। सारी कहानी नजर आ गई। उसके बाद गाने के अल्फाजों में उन्होंने और भी वाजे कर दी, जी और क्या रोमांस है, क्या नखरा है, और क्या सटलिटी है, सोफिस्टिकेशन है।
मुझे एक पंडित शांता प्रसाद जी की एक बात याद आती है। मैं बहुत छोटा था, वो लोग आपस में बड़े लोग सब जिक्र कर रहे थे। आई वाज जस्ट अराउंड एट दैट टाइम। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि ठेका ऐसा होना चाहिए कि ठेके में मेलोडी सुनाई दे, जी। और मेलोडी ऐसी होनी चाहिए जिसमें ठेका सुनाई दे। ओहो। और जब भी मैं अब्बा और शांता प्रसाद जी को सुनता हूँ साहब, मुझे ये बात हमेशा याद आती है कि जिस तरीके से अब्बा ने मेलोडी शुरू करी है, उसमें एकदम you're feeling the rhythm in your bones, you're feeling it in your, you know, you cannot just sit still. Your heart, your mind, your body, your soul, everything is moving to that. और जैसे ही शांता प्रसाद जी ने ठेका लिया या कहीं पे वो बीच में जब उभर के आते हैं, तो उसमें ओहो। इतनी खूबसूरती और मेलोडी सुनाई देती है कि क्या बात है। और वही सही जगह पे, मतलब जहाँ पे होना चाहिए वही जगह पे है ना। नेचुरल है ना सब कुछ, राम भाई, इतने नेचुरली हो रहा है सब कुछ कि I mean, I was, matlab, my inner instinct was dancing. I mean, not only mine, everyone, all the listeners who are watching us, I think around 40 to 50 people were watching at that time. So for everyone, I think the inner instinct starts dancing. एकदम, yeah, absolutely, because you know, again, I will say that जिस तरीके से बोल हैं जी। कॉम्पोजिशन के, उसको किस तरीके से अब्बा एक्सप्रेस कर रहे हैं सितार के जरिए, वो म्यूजिक नहीं है, he's feeling those emotions. What level of romance, you can see that picture, you can imagine कि वादियों में there's a beautiful lake and there's this beautiful woman who is there, जो आपके, you know, and how you're sort of romantically engaging with her, and the conversation, और उसका क्या, वो किस तरीके की है, उसके वो किस तरीके से चलती है, किस तरीके से स्माइल करती है, किस तरीके से देखती है, यू कैन पिक्चर, यू कैन फील ऑल ऑफ दैट। जी। एंड आपको अपना फीलिंग आ रही है, आपको अपना कनेक्ट हो रहा है, मुझे अपना हो रहा है, हम सब अपनी यादों में जा रहे जी। हैं। जी। You know, Actually. so it's incredible how I think in the similar line, as you were saying, Pandit Ravi Shankar ji in his autobiography, where he was, telling about Begum Akhtar, जी, कि उनका जब गाना लोग सुनते थे, सब लोग उनके दीवाना हो जाते थे। सब सही लोग बात है, सोचते थे कि मेरे लिए गा रहे हैं। सही बात है, So that personal connect starts happening for this एब्सोल्युटली, हाँ, great leader. एग्जैक्टली, जी। एग्जैक्टली। और एंड यूर कंप्लीटली, यू हैव अ वन ऑन वन रिलेशनशिप। एक 500 लोग ऑडिटोरियम में बैठा होगा, या हम जी। लोग जितने भी अभी सुन रहे हैं जी। साथ में, we all have a one-on-one connection to the music that we're listening to, जी। and yet there is an energy level that is flowing through all of us. You know, that's why concerts में जब जाते हैं, तो आजकल के एक लाइट म्यूजिक का, सॉरी गोइंग अ लिटिल ऑफ टॉपिक, जी, बिल्कुल। आजकल के लाइट म्यूजिक में मुझे लगता है कि एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है वो इलेक्ट्रॉनिक बीपीएम्स की, कि जब हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं कुछ लाइट म्यूजिक का, या कोई भी रिकॉर्डिंग आजकल कर रहे हैं, वो सब ट्रैक वाइज कर रहे हैं और बीपीएम्स पे कर रहे हैं, राइट? तो आपको इतना मूड उसके हिसाब से जाना पड़ता है। जब ये लोग परफॉर्मेंस कर रहे होते थे या रिकॉर्डिंग कर रहे होते थे, तो इन लोगों का बीपीएम होता था इनकी हार्ट बीट जी। और इनकी इंट्यूशन, अपना फीलिंग्स, फीलिंग्स। एंड देन जो लोग ऑडियंस में बैठे हैं, कलेक्टिव बीपीएम्स होती थी उनकी, आई और वो थिंक इट इज हार्ट बीट्स होती थी, यू सेम नो। थिंग गोes फॉर स्केल आल्सो। आई थिंक यू वर टेलिंग द अदर जी, डे, जी, सेम थिंग। अभी डी में करो तो डी में ही करो, सी शार्प में तो सी शार्प में। वो लोग इंस्ट्रूमेंट, अभी अमजद अली खान साहब एक बार अब्बा के लिए कहते कि उन्होंने सितार जो कहना चाहते थे वो कहलाया। सो दैट्स हाँ, व्हाई ही ही ऑलवेज नेवर स्टिक टू डी शार्प और डी। और उनका हर एक रिकॉर्डिंग का सितार का टोन, टिम्बर, आवाज अलग 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 है। सही अनलाइक द बात है। अदर, अनलाइक, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, अनलाइक अदर प्लेयर्स। Yeah, I mean, हम लोग, we're not having, we're playing music. जी। रिप्ले नहीं होता है। जी। We're replaying music. We're कुछ और conversations, तो you know what, क्या बोलें इनके बारे में, let's कुछ कुछ और,
जी, क्योंकि जब सुन रहे हैं तो और भी अच्छा फीलिंग हो रहा है देन विद द टाइम व्हेन वी आर स्पीकिंग, नो? You know what, Rama, maybe we can, if you have a Bhatyali that we can maybe play के एकदम देखिए कि from पहाड़ों से बंगाल कैसे कि किस तरीके से माहौल, फीलिंग, हवा, खुशबू सब चेंज होती है। जी, जी। भैया अनदर अनदर एस्पेक्ट व्हेन आई वाज़ लिसनिंग टू, जैसे पहाड़ी जैसा शुरू हो गया, हम्म, तो फॉर जब जैसे हम लोग जब कोशिश करते हैं कुछ टाइम, मतलब म्यूजिक को उसको एस्टेब्लिश करने में थोड़ा टाइम लगता है ना? लेकिन इन लोगों के लिए जैसे ही कोई एलपी शुरू हुआ, कोई भी रिकॉर्डिंग हम अब्बा का सुनते ही और कोई ग्रेट के हम सुनते हैं, तो जब से शुरू किया तब से ही वो माहौल बना बनाया हुआ माहौल जैसा लगता है कि दैट मीन्स द म्यूजिक गोज ऑन इन देयर माइंड एंड हार्ट एग्जैक्टली, ऑल द टाइम। एग्जैक्टली। वो माहौल तो ऑलरेडी उनके अंदर है। अब उन्होंने बात बाद में कही है, वो ऑलरेडी जी, उस फीलिंग में है, वो ऑलरेडी ऑरा, वो एटमॉस्फेयर में वहां पे वो पहुंच गए हैं। उसके बाद जी, उन्होंने एग्जीक्यूट अभी किया है। जी। सही अभी बात है। मैं जी भाटियाली का रिकॉर्डिंग में चला रहा हूँ, ये बीबीसी प्रॉम का उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के साथ है। हम्म। आई विल ट्राई टू प्ले दैट वन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ।
मिजाज का डिफरेंस देख रहे हैं आप राम भाई कि जी जिस तरीके से इसकी मुर्गियां थी, जिस तरीके से इसकी स्ट्रोक्स का वजन था, जिस जी तरीके से इसकी स्टोरी थी, वो जी कितनी मुख्तलिफ थी पहाड़ी से, पहाड़ी और से कितनी मुख्तलिफ थी खम्बात से। एक्चुअली आई वाज हैविंग अ फीलिंग ऑफ जस्ट सिटिंग इन अ बोट, वो जो बोटमैन इज डूइंग दिस, तो वो फीलिंग, वो वाला फीलिंग जो मीन के साथ डा 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 डा, वो जो एक नाव में चलते हुए जो एक वो होता है, मिजाज होता है, लहर, जो लहर। जो जी नदिया की लहर होती है, जी बट बट वो फीलिंग जो लाने के लिए, देखिए आर्ट, आदमी एक ही है, इंस्ट्रूमेंट एक ही है, लेकिन स्ट्रोक का वजन, टोन, मुर्की का स्पीड, शुरुआत में है नोट की मुर्की या बाद में है, ये हम लोग बैठ के सुन के एनालाइज और फील कर रहे हैं। द थिंग इज दैट यू हैव टू गो बियॉन्ड इट, वो उनके लिए which, नेचुरल था। yeah, that it comes naturally, that when you feel, when you're in Bengal, you feel that नदी की लहर, तो उसकी नदी की लहर या नदी की हवा वर्सेस पहाड़ की हवा में आपको क्या डिफरेंस, अगर वो आप फील कर लें, जो हम लोग सब फील करते हैं, लेकिन अगर हम उसको एक्सप्रेस कर लें नेचुरली, जस्ट द वे वी फील इट, not to show some aspect of it, but if you just naturally feel it and let that emotion out naturally, this is what the music is. और जाकिर जी का जो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, कितना बजाना है एंड कहाँ पे कितना बजाना है, दैट सेंस ऑफ प्रोपोर्शन इन दिस रिकॉर्डिंग एज एनी रिकॉर्डिंग, एनी अदर रिकॉर्डिंग। जी Absolutely. I mean, like, again, these people, one has to say, because the music, they're above music. They're above musician. जी I don't know. बट I mean, they're just amazing. बट भैया, टुडे म्यूजिशियंस आर सो बिजी, उनका फ्लाइट में इतना टाइम चला जाता है, अभी नदी का जो फीलिंग, पहाड़ का फीलिंग वो लेने का टाइम वक्त कहाँ है। सही बात है। So we have some other music piece. Maybe we can come to Pilu Since or any other. I think since we're going via regions, एक let's listen to Zakir Bhai Kabhi Bhi Suna. Let's listen to the Sindhi Bhairavi for a couple of minutes, and then let's talk about the composer Ustad Vilayat Khan, and we can play and talk about his compositions that he's composed for films, etc. Sure. Or what do you say? जी I mean, I'm बिल्कुल happy to listen to anything and everything. जी, let's listen to Sindhu Bhairavi. Yeah. जी. And another magical part is the same recording we are listening since childhood, thousands times, 1 lakh times. How many times I don't? We have uncountable times, but each time it comes with different colors. That is the another aspect. सही बात है. It's the same recording, exactly. Yeah, it's Same not just like a recordings. different rag. It's the same recording that makes us feel, and we hear different things from it. Wow, Yeah. very nice. Mhm.
हाँ. हाँ. भैया कैन यू म्यूट वंस. वहाँ पे कोई कोई गाड़ी जा रहा है तो इट इज. थैंक यू. हाँ. ओहो. हाँ हाँ हाँ. Yeah, Abbas, music was honestly a painting. इसको आप देख सकते हैं, फिर आप इसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. आप और ये हमारे जिंदगी के साथ इस तरीके से जुड़ गए हैं ना. आई मीन आई कैन नॉट इमेजिन माई चाइल्डहुड विदाउट एनी रिकॉर्डिंग ऑफ अब्बा. मतलब अगर हमारे चाइल्डहुड से वो रिकॉर्डिंग अगर हटा दें तो चाइल्डहुड में कुछ बचता ही नहीं है. यू नो some point in our life, some of our experience, it is so much immersed with his music. I'm sorry, ये पीछे कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है,
So if it's अच्छा, disturbing, just let me know. Then I'll turn my mic off. not a problem, not a problem. Particularly during the music, if you go on mute, then it will be helpful. Otherwise, during conversation, it is absolutely fine. Acha. जी. So again, it started, I think, yeah. So if we can, I mean, from his compositions, like his music for the films, आप इसके ऊपर अगर कुछ कहना चाहते हैं, Um, because जी. I mean, some part of your life, where you have seen him working, might not be during the Jalsaghar period, maybe during the time of Guru or later part. तो उस वक्त वो I कैसे सोचते थे extensively और saw about doing that documentary film in Calcutta. on Dr. R. Ahmed, right? Ji, With the ji, ji. initiative of with Dr. Barin Rai's initiative was there, right? Exactly. So I mean that is the one time I extensively saw him sort of working in a studio and composing and again his approach was always very sort of organic to what he saw in the film. It was a very difficult subject to score for somebody like him because he was not used to doing generic pieces of music. It was to create life, to create musicality and colors into that subject was a very, very difficult, I thought. I mean, having worked in doing background scores a little bit and everything, a subject like that makes it really, really difficult. And when we enter into subjects like that, we go a very generic route. Like, I mean, meditation ka agar kuch karna hai, so we're thinking of those gongs or things, so like through the years society has sort of made us go into a certain direction, but again, the way he was working, जी. the way he was composing was extremely organic, and he made a very non-musical subject beautiful and vibrant and very musical in doing so. Also, what I found very interesting is somebody coming from his caliber, his achievements, his thought process, how he would walk into a studio and any artist, whether it was somebody who was playing a cymbal or whether it was Tejenda playing a lot of pieces in there, everything, सबको आके उन्होंने पूछा, यार ये तो मैंने बना लिया है, ये तो तुमसे बजवा लिया है जो बजवाना है, इसमें और क्या तुमको लगता है आइडिया? So he was constantly taking, one thing about Abba and about, I just read a quote of Zakir Bhai's also somewhere, that he quoted his father, Ustad Allah Khan Sahab, that it's not, the greatest thing about all of these great maestros and what is in common is they were the best students in the world. जी. वो लोग उस्ताद बनना, गुरु बनना, लेक्चर देना, राग सुनाना में इंटरेस्टेड नहीं थे. वो उनका मेन फोकस लाइफ का था हम क्या किससे सीख लें किस वक्त, एंड वो कॉन्स्टेंटली उस फिराक में रहते थे. तो हर एक अपॉर्चुनिटी उनकी लाइफ में वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर देम. So Abba as a composer with people, and I remember जब वो स्टूडियो में थे तो वो जिस तरीके से जाके, अच्छा बेटा इसको कैसे करना चाहिए, वो छोटे से मतलब एक म्यूजिशियन को जिस तरीके से जाके पूछते थे, पहले तो वो घबरा जाता था कि यार क्या मतलब मैं उस्ताद खान साहब को क्या बोलूं, ये मजाक कर रहे हैं या टेस्ट है, ये क्या है. बट विद इन 2 मिनट्स वो अब्बा को एक उस्ताद के जैसे बता रहा होता है कि उसके क्या दिमाग में है, और अब्बा एक शागिर्द के जैसे सुन रहे होते थे वहां पे. That was a mind-blowing experience for me, to see that transformation and that desire to learn constantly. But I think हम लोग लंबी बातें हो जाती हैं. अब्बा का कोई भी सब्जेक्ट ले तो इतना लंबा आराम से वक्त गुजर जाता है. But maybe we can play something of Abbas from the film compositions and something, whatever you. जलसाघर से हम थोड़ा सा क्लिप सुनते हैं. जी जी. जी.
हाँ 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 This is the hallmark piece and permanently etched in each and every Bengalis memory. This particular piece, You know the what's so signature amazing of about both these Jalsa. pieces, Ram bhai? जी The बोलिए. the first piece, आप सुनिए, अगर आपने फिल्म देखी नहीं है तो जी आपको ऑटोमेटिकली उस फीलिंग, वो एक विजुअलाइजेशन ऑलरेडी आ जाता है पीस सुन के, उसका जी टेंशन, उसका चॉइस ऑफ राग, टोन्स, इंस्ट्रूमेंट, यू नो एवरीथिंग, उससे एक विजुअलाइजेशन आ जाता है. उसके बाद ये जो पीस है, सेकंड पीस, वो अब्बा ने कितने बार क्लासिकल कॉन्सर्ट्स में बजाया है, कितने लोगों ने बजाया है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से उसको बजवाया है, उसका एक पूरा विजुअलाइजेशन और फीलिंग कितनी अलग हो गई है. जैसे वो दैट पर्टिकुलर जमीन जो बड़ा मकान है ना, हम्म, उसको उसके अंदर कोई अगर एक घूम रहे हैं एक रूम से वन रूम टू अदर, और हम्म. उसमें जो पुराना पेंटिंग्स है, वो पूरा जो माहौल है वो मूवी का, दैट परसेप्शन कम्स थ्रू द म्यूजिक. एंड जो एग्जैक्टली. पहले का जो ललित में जो तान चल रहा था, और उसके पहले फ्लूट, वायलिन और बाकी सुरबहार में भी शायद इमरत खान साहब थे, और फिर अब्बा ने तान बजाया उसमें. तो दैट टाइम इट लाइक जैसे वो छवि विश्वास जब वो घोड़े के ऊपर सवार होकर जब चल रहे थे, उसमें घोड़े का भी वो आवाज हो रहा है, राइट. इन दैट वो उसके मूवमेंट के साथ साथ तान चल रहा है. सो दैट विजुअलाइजेशन कम्स डायरेक्टली इनटू माइंड. तो उनका जो एग्जैक्टली. स्टोरी टेलिंग, जो म्यूजिक के थ्रू स्टोरी टेलिंग, तो वो जो मूवी का स्टोरी के साथ हाउ इट इज मतलब मिक्स हो रहा है, दैट इज रियली माइंड बॉगलिंग. We are having couple of requests from the audience to play ragas like his Hallmark Darwari recording,
है ना? जी Then the Hallmark Yaman recording. But today we are discussing on the semi-classical aspects. So we are actually sticking to the ragas like Pilu, Khamaj, Bhairavi, Pahadi, Gara, and so on and so forth, and his work on the commercial work like film music and all. We are having one beautiful question from one of the most prominent young tabla exponents from Calcutta. He is Rupak Bhattacharya, my very close friend and disciple of Pandit Anindu Chatterjee. He is having one question. Let me read it out. Thanks to Ramprapanna Bhai for organizing this valuable discussion. Namaskar Hidayat Bhai. Could you please throw some light on this perception as a performer on stage? I am keen to know about his own philosophy, Abba's own philosophy, about when an artist of his stature appears on the stage for public performance. Yeah, it's a very. I don't know, Rambhai, would you like to answer it, or should I try and answer that question because it's very deep. It's not that easy to sort of word it. टू बी ऑनेस्ट मैंने उनका जो 7-8 परफॉर्मेंस देखा, द फर्स्ट परफॉर्मेंस आई रिमेंबर 1997 डोवल लेन साबिर खान साहब के साथ आप भी थे, यू अकम्पनीड हिम, ही प्लेड सांसरावली. So I purchased, I got the last ticket for the last row, and I was so disappointed. And my father gave me a binocular, you know. तो बोले कि ठीक है पीछे तो सीट मिला है, लेकिन मुझे बोला कि मुझे कहना था कि मुझे हाथ देखना है, hand movements and all those things I want to see from very close. Then he presented me a binocular, and that was the kind of respect and love I had for Abba, and that is the kind of affection my father had for me. So this is my experience with Abba. Later I got his blessing. I was very fortunate. But I think this question is for you because you have seen him from very close quarter for long duration, for many uncountable events. Definitely I can join you with my feelings and my little understanding, but I think you can start, and then we both can take it forward. Zarur. From the way Abba, अगर आप देखेंगे most of Abba's concerts, एक उम्र के बाद I used to carry a sitar because he was an older man, he was slightly weak. But उसके पहले he would always carry his sitar to the stage. जी. आपको कभी नहीं नजर आएगा किसी वीडियो में, किसी परफॉर्मेंस में कि अब्बा का सितार स्टेज में पहले से रखा हो. Obviously there was a reason of respect in there, but there was a very technical reason also that will give you an insight to his mindset. स्टेज का टेम्परेचर कभी ठंडा, कभी लाइटों की वजह से गर्म, कभी इंडोर, कभी आउटडोर, वो साज पे फर्क पड़ता है. तो अब्बा साज को अपने साथ इस तरीके से साइड में लेके रखते थे, विंग्स में खड़े हुए जब तक वो अनाउंसमेंट हो रहा है और उनको बुलाएंगे स्टेज पे. वो इस वजह से था कि साज इज यूज्ड टू द वार्मथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एंड विद दैट वार्मथ वो साज जमा रहता है एंड इतना उसको एलिमेंट्स अफेक्ट नहीं करते हैं. तो जो इंसान इस सटल और इतने डीप लेवल पे सोचता हो अपने परफॉर्मेंस के लिए, तो आप उसकी आगे की बात सोच ही सकते हैं कि वो स्टेज पे जब जाते थे तो किस रेफरेंस से जाते थे, किस फीलिंग से जाते थे, और उनका क्या मतलब कितनी सोच और कितनी years of research and thinking होगी कि वो किस तरीके से अपने ऑडियंस को कनेक्ट करें. और दूसरी में मुझे एक अब्बा की इंसिडेंट याद आता है. कलकत्ते का इंसिडेंट था डोवरलिन म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में. जितनी सीटें थी उससे कई ज्यादा लोग थे. तो जब अब्बा स्टेज पे आए, there was a little bit of a chaos in the audience. And actually not a little bit, quite a bit, because they were all fighting for seats. There were almost double the people to the seats over there. And we were tuning, and I was about to say something to the audience in not the most sort of a polite way, because I had a chip on my shoulder, or I hadn't dealt with the experience of this world and
I didn't have an understanding at that point. So before I could say something to the audience, Abba took over and he spoke in Bengali and he says, I'm going to try sort of, if I can remember exact words he said, but he says, আমি এতদিন থেকে এখানে আপনাদের জন্য सेवा कर रहा हूँ. And he said, this is the only place in the world where people don't call me Ustad, Guru or anything. আপনারা আমাকে ডাকেন আমাদের বিলায়েত. এখন আমার বয়স হয়ে গেছে, তো আমি দেখছি কি আপনি এত প্রেম করে এতজন এসেছেন, তো প্লিজ যেখানে জায়গা পাচ্ছেন ওইখানে বসে যান, ওইখানে জায়গা নেই তো আমার কাছে এখানে এসে বসে যান, কি আমি বাজাতে শুরু করব. সরি, মাই বেঙ্গলি ইজ রিয়েলি গটন ব্যাড. একদম পারফেক্টলি বলা আপনার. But the impact, the warmth, the love that Abba spoke with, it was a magical moment, Ram bhai. जहाँ पे जो लोग खड़े थे वो वहाँ पे बैठ गए, and I've never seen a crowd of people become silent and completely in sync with you in a matter of a millisecond. It was magic. फिर अब ने अपना program शुरू किया. So I mean, there are so many things. It's a very beautiful question, and it's a very important question for young artists to know. But it's so vast. मतलब कहाँ उसका stories बताऊँ. This was his last duvel, and I think 2002 January 25th. If I'm not very wrong, you were there, and he played with Pandit Sapan Chaudhary. Ji. And it was Rag Purva. Ji. So I was there. What a magical moment! Vividly remember this thing, and yes, absolutely. What a magical and what a humbling moment. আপনারা চলে আসুন আমার এখানে চলে আসুন স্টেজে আমার পাশে এসে বসুন. I remember this. Yeah, and जिस तरीके से उन्होंने बोला, and you know, he really felt that, and he was very grateful. मैं आपको बताऊं, he was very grateful under such adverse circumstances. Abba has performed for his audience. मैं आपको बता नहीं सकता कि even as an Ustad Vilayat Khan, sometimes situations were just beyond his control. उनकी उम्र हो गई थी, his health wasn't that great, he wasn't feeling good, or the sound was horrible, or this was loads of adverse conditions. But when he got onto the stage, he felt such commitment to his audience. He felt such commitment and responsibility that उन्होंने अपने कभी शक्ल पे शिकन भी नहीं होने दी कि audience को feel हुए कि he's upset or something. I mean, he gave his heart out to every performance all his life. Absolutely. And two things which we who followed him from a distance, what we have heard from his interviews, from his other mediums, two things he used to say: when you play, then you play with an authenticity of an ustad, and when you perform, then when you listen to someone, then listen with the humility of a student. And that aspect you already mentioned when you mentioned about his work in the studio while interacting with junior musicians, even the junior musicians. And second thing, in the DD interview, the very famous, I think it was done by Hariprasad Chaudhary's wife, if I'm not wrong, that DD documentary, the Doordarshan documentary, where actually when it was telecasted in early 90s, then we did not have VCR on video recorders. I recorded that entire thing in audio cassette. Then I almost memorized this thing कि जब भी मैं स्टेज पे जाता हूँ, मैं यही सोच के जाता हूँ कि मैं इबादत करने के लिए जा रहा हूँ. Every time I go for performance, I think I'm going for a prayer. And with that mindset, when I go, then I don't take the audience casually. I always take my audience seriously, and every time my goal is to be better than yesterday. जी. So these are the words. अब हम लोगों को तालीम के टाइम पे हमेशा एक चीज और प्रोग्राम के टाइम पे हमेशा एक चीज बोलते थे कि बेटा प्रोग्राम परफॉर्मेंस में अगर गलती हुई कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम
घर से रियाज करके तुमको फील, अगर तुम स्टेज पे चढ़ने के पहले तुमको फील हो कि यार आई विश आई हैड डन मोर वर्क, आई wish I was a little bit better prepared for this. He said there is no excuse for that. Go up on stage prepared, not 100%, 150%, 200%. And after that, what happens? Don't worry from it, learn from it. उनका ये हमेशा एटीट्यूड रहता था, और उसके और उसमें फिर स्टेज पे आप जब उस एटीट्यूड से जाएंगे तो आप ऐसी कोशिश करेंगे जो थोड़ी सी गड़बड़ भी हो सकती है, लेकिन वो कोशिश अच्छी हो, उसका वो एक आमद की तरह हो कि आप एक सब्जेक्ट लेके चले हैं, वो खूबसूरत सब्जेक्ट बन रहा है, एवरीथिंग हो रहा है, उसके बाद एक जगह नजर आए कि यार यहाँ पे उसकी आमद आनी चाहिए, बिकॉज दैट मोमेंट टोल्ड यू, तो आप लेके आ गए। तो कभी बात एग्जैक्टली वैसे नहीं बनी, लेकिन उसकी फीलिंग हमेशा वैसी ही हो जाएगी। उसको आप घर पे से एकदम प्रैक्टिस रिहर्स करते 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 आओगे तो हाँ, वो आमद तो आपकी एकदम धड़ाम से आके ऐसे गिरेगी जैसे मतलब परफेक्ट, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो माइंड, बॉडी और सब लोगों पे होगा, it's not going to be, it's going to be a moment, not, it's not going to be a moment that grabs you in your heart. So he was very sort of yeah, any conversation of about takes us in a direction that we can talk about forever, One story my father heard from Pandit Gyan Prakash Ghosh on a concert of Ustad Amir Khan sahab, ki at some point he was trying to create some amad, but it did not match with the tal at certain point, and that gap he filled up with a very beautiful tal. The musicians sitting over there, they understood what happened, and then they shouted कि खान साहब ऐसे गलती बार बार कीजिए ताकि ऐसे आमद की तरह हमें सुनने को मिले। क्या बात है, वाह। I think we are 1 hour 15 minutes, bhaiya. So just to wind up quicker, what you want to play, or if you want to throw some light on some other area topic, then we can. I mean, I really honestly didn't think we were going to extend this talk for this long, but it's, I guess it's easy to do this with Abba. उनका एक as a उनका एक वो मनकुंतो मौला का जो है, if we should we listen to that as we say bye to everyone, या आप बताइए। जी बिल्कुल, we can conclude this session and with that Mankunta Mola piece. I think it is a short recording. We can listen to it and we can conclude. And our thanks from ICMC to all of you for joining for so long, because the topic is Ustad Vilayat Khan and his music. So भैया ऐसा लग रहा है कि सितार, वो मनकुंत मौला का जो बोल है, सितार इज एक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग द सेम बोल जैसे बोल रहा है। क्या बात, सितार है ना, सही बात। वाह।
Oh, Bhaiya, sorry to interrupt. I think this is again Santa Prasadji, right? Because the qualities that you were talking about before, um, his tonal modulation based on the Amadavabba, right? The same qualities that we are listening here again. Ji. Mhm.
भैया ये ख्याल अलगाने, ये सारी चीजें कव्वाली, ये सारी क्लासिकल म्यूजिक में गाने बजाने में सितार में अमीर कुत्तों के जमाने से होती चली आई है। सॉरी सॉरी, बाय मिस्टेक मेरा प्रेजेंटेशन बंद हो गया somehow. Oh, we're not live anymore? No, no, we are live. The screen sharing इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं. No, you know what, Rambhai? Yeah, I think we are live, but Just if it's stopped, it was meant to stop over there. okay. I would just thank you for all the love to all the audience that you've given us and sort of bared with us through these sessions. We speak from our hearts. कुछ गलती हो जाती है तो हम लोग को माफ करिएगा. Seriously, क्योंकि हम लोग अपने ये ज़्यादा हम लोग कोई एक्चुअली ज़रा भी स्क्रिप्ट नहीं करते ये सब चीज़ें. थोड़ा सा बस डिस्कस करते हैं कि क्या किस बारे में जिक्र करें. राम भाई और मैं एकदम अपने दिल से हम लोग ये एक अब्बा को याद करते हैं और उनका जिक्र करते हैं. इसमें अगेन एज आई सेड कुछ गलतियां हो गई हम लोगों से तो प्लीज़ हमें माफ़ करिएगा. लेकिन ज़रूर हम लोग दोनों को और सब म्यूजिशियंस को ऑफ today's era उनको सबको दुआएं दें कि we have some qualities of Ustad Vilayat Khan Abba in us and we are able to continue this tradition because it's our responsibility. And as much as we have taaleem, as much as we have knowledge, but we need and Riyaz behind us, but we need blessings. So आप लोग please हम लोग के लिए दुआएं करें कि we continue this music and we are able to do all, like, take this work forward at, at some place because इन बुजुर्गों ने इतना छोड़ के गए हम लोगों के लिए, इतना छोड़ के गए हैं. So it is very important for us to continue and cannot be done without blessings of you all. So please keep us in your prayers. Thank you so much. Namaskar.